Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab External Bank. So IBPS clerk notification came on 1st of this month, and I advise you to wait for few days before you fill the form because we are covering each and every aspect of this notification, and after having informed knowledge, you should fill the form. Already I have made a playlist link is available in description. Watch all previous videos to have clear understanding of IBPS clerk notification. Now one of the question asked by most candidate is, sir, should we fill from own state or from other state? This is one of the ticklish question that affects our entire career. So I will be talking some basic aspects that should be kept in mind before filling the form. Now if we look at the notification, around 8 states are there where there is a zero vacancy or one vacancy. In such circumstances where there is already zero vacancy or one vacancy, so we have to wait for few more days till we have some clarity about vacancies. When the 7 banks, those have not reported the vacancies, it is likely that before last date, some of them may report the vacancies. And even if in these remaining days, these bank does not report the vacancies, we will review the situation and I will guide accordingly. But in all cases where number of vacancies are low or 0 or 1, candidates from these states must wait for more clarity. This is my advice. Second, if you are really interested that I want to rush for a state where large vacancies are there, you have to keep certain basic things in mind. Sometime out of desperation, because you may be looking for a job and you are not getting the job, and this desperation may lead you to a wrong decision. So you must take right decision. I will be discussing some important aspect of posting and life at a clerical level so that you can take an informed decision whether to go for other state or to stick to our own state. Now in clerical, you are posted in your own state. Say you are selected for a particular state, you will be posted in that state. If you choose Maharashtra, you will get some city in Maharashtra. If you are selected for Gujarat, some state in Gujarat, and so on. But if you apply for another state, naturally you will be posted in the some city or village of that very state. Now due to linguistic problem and due to food habits, some candidate may face real difficulties pulling on their life even if they are posted. So the one aspect that should be kept in mind is the food habits of a particular state and language spoken in that particular state. Because some candidate will say, sir, I will pass LPT. Simply passing of LPT will not ensure smooth life for you. If you are posted in a state where language is different, unless you become fluent in that language, it will be difficult to carry your day-to-day life. That is my experience because I have worked at various states during my career and I have felt all these things myself. So my advice is try to apply for a state that is your own state, and even if you want to go for another state, choose a state where you can live. The living should be one of the considerations that should be kept in mind, and living will depend how far it is from your native place. Second, what are the food habits there and what are the languages that you have to learn if you are going to another state. Whether same state have same language which you are speaking, then it is more comfortable. Another important issue is LPT. Sometimes we apply for another state and we fail to pass LPT, we lose the job. If we would have applied from our own state, it is likely you might have crossed the cutoff, you might have got the job,
because LPT is easier in your state, or you may not even go for LPT. There is a separate video on LPT. Watch that video, that is available in the same playlist. So while deciding the state where you should apply, my take is always prefer your own state so that you remain comfortable with your postings. But even if you are applying for another state, you should look into various aspects whether you will be able to sustain your life in that particular state. Don't go by the advice of people. Those may be giving advice for the sake of advice. This is my simple words. Second, some people say, sir, say I am posted in A state. Whether I will be getting posting back to my state? If yes, after how many years? Because I am ready to sacrifice few years of my life. Now here, IBPS clerk is a better option than SBI junior official. In SBI, no inter-circle transfers are now permissible. But in case of IBPS banks, interstate transfers are possible. But that possibility depends upon the management policies prevalent at a particular point of time. In some banks, you may get a chance to apply after 3 years. Some banks maybe after 5 years. Sometimes maybe after longer period. So it will depend the bank which is allotted to you and what is policy for that. But in most public sector banks other than State Bank, interstate transfers are possible in clerical cadre. They are difficult but not barred. This is one thing that can give solace to some of the candidates. Those are thinking to go for another state and then pin a hope that they want to come back to their own state. Second thing, on promotion also you have an opportunity. Say you join in clerical cadre, then after 2-3 years you become officer. Some banks take option, and sometimes some lucky candidates may get the option for their native state and they go to their native state as an officer. That is also possible. So these are some positive features and there are some negative features. Balance all these things and decide. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और उससे संबंधित वीडियोस हम निरंतर बना रहे हैं. मेरी आपको सलाह है कि कम से कम 12-13 दिन आप रुकिए उससे पहले कि आप अपना फॉर्म भरें. कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी है, वो एक प्लेलिस्ट में डाल दी है. प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है, वो सारी वीडियोस आपको देखनी चाहिए. आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि क्या मुझे अपने स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या मुझे दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए. अब आप देखेंगे इसमें कई स्टेट हैं जहां 0 वैकेंसी है या 1 वैकेंसी है. नेचुरली अगर कोई इसके लिए आज अप्लाई कर रहा है तो उसके चांसेस तो नेग्लिजिबल है, मगर ऐसे सब कैंडिडेट्स को वेट करना चाहिए कुछ दिन तक. हो सकता है जो 7 बैंक हैं जिन्होंने अभी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है वो आखिरी तिथि से पहले कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट कर दें. हर साल ऐसा होता है, इस साल भी ऐसा होगा. तो आप वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए. और जब ये सिचुएशन क्लियर हो जाए और बैंक्स की वैकेंसीज आ जाएं और रिवाइज नोटिफिकेशन आ जाए तब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1. दूसरा ये है कि अभी आपके स्टेट में वैकेंसी है बट कम है, वो लोग भी वेट कर सकते हैं. और तीसरा वो है कि आपको लग रहा है कि ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं. अब अगर आप पूछे कि मुझे कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी आधार नहीं होना चाहिए आपका. आपका आधार ये होना चाहिए कि मेरा अपना स्टेट फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि क्लरिकल लेवल पे जो पोस्टिंग होती है वो विद इन स्टेट होगी और उसके कुछ शहरों और गाँव में होगी. इसलिए अगर आपका अपना स्टेट है तो आप कंफर्टेबली नौकरी कर पाएंगे, और अगर आप दूसरे स्टेट में हैं तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब ये दिक्कतें क्या हो सकती हैं?
सबसे बड़ी दिक्कत आती है खाने पीने की। जो खान पान है हमारा, जो रहन सहन है, वो हर स्टेट में डिफरेंट है। तो कई कैंडिडेट दूसरे स्टेट के जो भोजन पद्धति है उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि जिस स्टेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ किस तरह का खान पान है और क्या मैं उसमें अपने को एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। दूसरा विषय है भाषा। कौन सी भाषा वहाँ बोली जाती है, क्या उस भाषा का मुझे ज्ञान है। देखो, एलपीटी पास करना एक इशू है, मगर उससे काम नहीं चलेगा। आप क्लरिकल कैडर में हैं, आप फर्स्ट लेवल पर बैठे हुए हैं, हर कस्टमर ने आके आपसे बात करनी है और वो बात लोकल लैंग्वेज में ही करेगा। तो यदि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो रोज़मर्रा के काम में भी आपको दिक्कतें आएंगी। और इसीलिए एलपीटी रखा जाता है ताकि वही लोग सेलेक्ट हों जिनको वो भाषा आती है। कई लोग कहते हैं हम भाषा सीख लेंगे और हम एलपीटी पास कर लेंगे, वो आपने खुद देखना है। तो जब भी आप कोई स्टेट चुने तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि मुझे अल्टीमेटली उस भाषा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है ताकि मैं लोगों से बातचीत कर सकूं। ये दूसरा विषय है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तीसरा विषय जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए वो है कि आपके घर से दूरी कितनी है इस जगह की। क्योंकि जब आप दूसरे सेंटर पे पोस्टेड होंगे, आप बार बार आपको घर भी आना होगा, अपने पेरेंट्स से भी मिलना है, रिश्तेदारों से भी मिलना है। तो वो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, क्या आपके लिए संभव है, क्या आप आ पाएंगे, इसको भी आपने दिमाग में बनाए रखना है। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर मुझे तो नौकरी चाहिए, कहीं भी मिल जाए, मैं तो जाने को तैयार हूँ, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मैं कभी अपने घर वापस आ पाऊँगा। मैं कुछ अपने जीवन के साल सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। तो क्या ये संभव है कि कभी मैं अपने स्टेट या अपने नेटिव टाउन में आ पाऊँ? ऐसा आईबीपीएस क्लर्क के बैंकों में संभव है, स्टेट बैंक जूनियर एसोसिएट में संभव नहीं है। स्टेट बैंक के अंदर पॉलिसी ये है कि जिस सर्कल के लिए आप अलॉट होंगे वहीं पर आप रहेंगे। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र परमिटेड नहीं है, वो नोटिफिकेशन में पहले से ही आपको बता के चल रहे हैं। पर आईबीपीएस के केस के अंदर ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा बैंक मिलता है। इसमें लगभग जितने भी बैंक हैं उन सब के अंदर इंटर स्टेट और इंटर सर्कल ट्रांसफर्स परमिटेड है, मगर हर बैंक में ये समय सीमा अलग अलग है कि कितने साल के बाद आप एलिजिबल होंगे। उसमें एश्योर्ड नहीं है ट्रांसफ़र, पर एलिजिबिलिटी है कि कई बैंकों में 3 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में 4 साल बाद, कुछ में 5 साल बाद, और फिर ज़रूरत के अनुसार इंटर सर्कल या इंटर स्टेट ट्रांसफर्स की जाती है। दूसरा मौका मिलता है जब एक क्लर्क ऑफिसर बनता है। जब एक क्लर्क ऑफिसर के लिए एलिजिबल होता है, पास कर लेता है, तो उसको कई बैंकों में ऑप्शन आती है कि कौन से स्टेट में जाना चाहते हो। और काफ़ी बैंकों में ऐसे भी लक्के कैंडिडेट होते हैं जिनको अपना स्टेट ही मिल जाता है। तो क्लरिकल में तो ज़रूर वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, अफसर बन के अपने स्टेट में आ जाते हैं और काफ़ी समय तक अपने स्टेट में रहते हैं। तो ये भी संभव है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। बाकी मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस किए, पर फिर भी जहाँ तक संभव हो आप अपने स्टेट में अप्लाई करें। और अगर आपको अप्लाई करना है तो बाकी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करना है, क्या वहाँ के भाषा को आप सीख पाएंगे, क्या खाना पीना आपके लिए वहाँ संभव होगा, क्या दूरी है आपके घर से, इन सब चीज़ों का विचार करें और फिर डिसीजन लें। डिसीजन आपने खुद लेना है, इधर उधर की बातों में आके गलत डिसीजन नहीं लेना है, ये मेरी आपको बार बार सलाह है। गॉड ब्लेस यू ऑल।